Hello friends, today in this video I'm going to tell you how to delete Instagram account permanently. So if you want to do that, you can follow the same process in mobile and PC as well. So how can we do that? First of all guys, you have to go to this link and ये link मैं आपको description में दे दूंगा नीचे, so you can go and click on it directly. So when we click on it, you must be logged in your browser. So we are going to delete our Instagram account in browser only. So application doesn't provide that option. So we have to first log in your we have to log in our Instagram ID before deleting. So let's do that. So friends, once you logged in, now you have to go to that link. Once you logged in your browser, let's go to that link again. So when we go to this link, because this will remove your Instagram account permanently, so we have to select the reason why we are going to delete our Instagram account. So can't find people, trouble, want to remove something, or concern about my data, too many ads, create second account, privacy concern, something else, तो something else डाल देना एंड उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होगा अगेन. सो जो भी पासवर्ड है आपको अगेन डाल देना है, ठीक है. एंड उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि इफ़ यू कंटिन्यू एंड योर प्रोफाइल का अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन September 4th 2022, यानी कि 30 दिन बाद आपका अकाउंट पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा. अगर उससे पहले आप लॉगिन कर लेते थे तो आपकी जो ये अकाउंट है वापस से आ जाएगा. इसलिए उससे पहले अगर माइंड चेंज कर लेते हैं और वापस से लॉगिन कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आपका अकाउंट आ जाएगा. लेकिन उसके बाद आपका अकाउंट पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा. तो डिलीट करने के लिए यू हैव टू गो टू दिस ऑप्शन डिलीट एंड आपका यूज़र नेम आ जाएगा. तो इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे. सो यहाँ कह रहा है सॉरी योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, लेट मी ऐड अगेन, आई मस्ट हैव एंटर्ड a wrong password. Now again, and see you can see that your account will be deleted on September 4 2022 after 30 days. So before 30 days, if you change your mind and you logged in your account will be safe and won't be deleted. Yeah, so that's how you can delete your Instagram account permanently. I hope you like it. See you in the next video. Till then.